দার্জিলিং টি না গোমূত্র? দার্জিলিং টি। গান্ধী না গডসে? এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি এক্ষুনি দেবো না, এটা ভাবতে হবে। I also approached BJP. BJP also approached me. What is the provision of cooling off period? What is the provision? Can you show me? You are fully unfit for NDTV. How far these judges were in touch with the party in power? You have no judicial discipline at all. You don't conduct yourself to, you don't adhere to the oath of office. And while he was a judge, he started giving interviews to channels. He was reprimanded by the Supreme Court of India. He'd been talking to that political party even while he was a judge. All the while he was giving judgments in politically sensitive matters. नमस्कार, वेलकम टू लीगल ऑब्जर्वर। अभिजीत गंगोपाध्याय याद है आपको? जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, मिल गया उनको टिकट बीजेपी से। उनको वेस्ट बंगाल की टमकोल जो पार्लियामेंट्री सीट है वहाँ से वो उम्मीदवार बन गए। कांग्रेस के जो एक नेता हैं जयराम रमेश जी, अब उन्होंने उनके एक बयान पर आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने कहा है कि भाई इनको इनकी उम्मीदवारी वापस ले लेनी चाहिए। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बारे में एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसको लेकर के जयराम रमेश जी का कहना है कि साहब इन्हें वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये गांधी और गोडसे के बीच में चुनाव नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा कि मुझे गोडसे की स्पीच पहले सुननी पड़ेगी, तब मैं अपनी राय बनाऊंगा। अब बताइए कितने मासूम है जयराम रमेश जी, है? इतनी सी बात पे कोई ले लेगा क्या वापस? अरे भैया चुनाव घोषित हो गए हैं, अब चुनाव में तो जुमले, आरोप प्रत्यारोप, नारे यही तो लगेंगे। अब कोई जयराम रमेश जी को याद तो दिलाए कि कंगना रनौत, जिनको मंडी से भाजपा का टिकट मिला है, उनके बारे में जो उनकी कम्युनिकेशन विंग की चेयरपर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उनका जो बयान चल रहा है अभी कि मंडी में क्या भाव है, उसको लेकर के जो आपत्ति चल रही है, उसको लेकर के तो उस पर क्या कहेंगे जयराम रमेश जी? अभिजीत गंगोपाध्याय के जिस बयान को लेकर ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, पहले अगर आपने नहीं सुना है तो वो बयान हम आपको सुनवाते हैं। पहले बंगला में आप सुनिए, बंगला में उन्होंने किस तरह से कहा। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे एक रैपिड फायर सेगमेंट में उनसे पूछा गया था कि कई सवाल उनसे पूछे गए, उसी में गांधी और गोडसे से जुड़ा ये प्रश्न था, तो आप खुद ही सुनिए। कार्ल मार्क्स ना दामोदर विनायक सावरकर? সাভারকার। ধর্মনিরপেক্ষ ভারত না হিন্দু রাষ্ট্র ভারত? ধর্মনিরপেক্ষ ভারত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় না মান্না দে? হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কথামৃত না হনুমান চল্লিশা? দুটোই। ইস্ট বেঙ্গল না মোহনবাগান? মোহনবাগান। দার্জিলিং টি না গোমূত্র? দার্জিলিং টি। গান্ধী না গডসে? এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি এক্ষুনি দেবো না, এটা ভাবতে হবে। तो आपने भी सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा। बाकी सवालों पर उन्होंने बिल्कुल धड़ाक से जवाब दिया। उनके कई ऐसे जवाब जो दार्जिलिंग टी और गौमूत्र से जुड़े पे उन्होंने कहा कि नहीं मुझे दार्जिलिंग टी पसंद है। सावरकर से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने जो बात कही, या उससे पहले के सवालों पर भी जो उन्होंने बात की, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद ना आए, लेकिन गांधी और गोडसे वाले इनके बयान पर ये विवाद शुरू हो गया। अब जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने बाद में, हालांकि जानी मानी पत्रकार बरखा दत्त के शो में उन्होंने इस बात का भी स्पष्टीकरण दिया कि दरअसल वो गोडसे की आइडियोलॉजी को बड़ा नहीं मान रहे हैं या गांधी जी के योगदान को छोटा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये उनका हक है, पहले वो पढ़ ले, पहले वो समझ ले। Panel is making a lot of headlines. You were in a rapid fire. You were asked secular or Hindu country. You chose secular. Then you were asked Gandhi or Godse, and you said I'll have to think about it. Gandhi is the father of the nation. Godse is his assassin. Why did you say you will have to think about it? Because I really think I have to think about it, because Godse showed a lot of reasons for killing Gandhi. I have not read that, only I have heard that. So, in my view, I have to weigh both the things. The Gandhi's view, or some of views I know, and I do not know any view of Godse. Now, are you saying you don't know? Are you saying, sir, are you saying you don't know enough about this matter, or are you saying you sympathize with Godse? Which one are you saying? No, I do not know enough about the matter. I do not sympathize with Godse, because I do not know what were the reasons why once upon a time Godse was a Gandhian. That I know. And he later
later he shoot Gandhi. बहरहाल तो ये तो मामला देखिए, अब चुनाव के बीच में आरोप प्रत्यारोप चलेगा। हम बात कर रहे हैं मुद्दा अभिजीत गंगोपाध्याय, जस्टिस, भूतपूर्व जस्टिस, जो कि अब नेता बन गए हैं बाकायदा, अब तो उन्हें टिकट भी मिल गया है, प्रत्याशी हैं। ममता बनर्जी ने जो है उनके खिलाफ अपने स्टूडेंट विंग के एक बड़े जुझारू तेज तर्रार नेता को, दिबांशु भट्टाचार्य जी को उतारा है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब चूंकि ये मामला था शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के, जिसके चलते अभिजीत गंगोपाध्याय जी ने कहा कि उनकी अंतरात्मा जागी और उनकी अंतरात्मा ने कहा कि नहीं, कोर्ट में जो तुम फैसले दे रहे हो उससे जनता का भला नहीं होगा, उससे कुछ नहीं बनेगा, आप सीधे मैदान में उतर जाओ। और उन्होंने कहा कि अब कोर्ट में मेरा जो समय था वो पूरा हो गया, लिहाजा मैं अब मैदान में डायरेक्ट उतरूंगा और मेरे राज्य वेस्ट बंगाल में जो पूरे दुर्दशा चल रही है उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। And unearthed a large number of important persons in the education sector of this government are now languishing in jail under trial. Thereafter, now I am taking labor matters. They are also large scams of the employers in respect of provident fund, gratuity, etc. I have also passed certain orders in those respects. But what I have felt while doing these matters of labor matters, labor legislation, what I have felt that my job in this duty, in this very respectable duty of a judge, my job is over. This is the call of my conscience that now I should go to the larger people, larger area. In court, a judge deals with the matters which comes before him if a person files a case. But in our country and also in our state, West Bengal, there are a large number of persons who are very helpless, which I have found. Not that they always have some cause of action for coming to court, or they cannot come to court. So I have thought that only the political field can give the persons who wants to take steps in respect of those helpless people a chance to act for them. So I have decided to leave the post, to resign, and I will work for them in some form or the other. अब ज़्यादातर मामले तो उनके पास जो आए थे उसमें टीएमसी के अगेंस्ट ही वो जजमेंट दे रहे थे। तो बहस जो बड़ी शुरू हो गई है वो इस बात पर शुरू हो गई है कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का ये जो कदम है कि अचानक रातों रात उन्होंने जुडिशरी से इस्तीफा दिया और 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उनको राजनीतिक एक स्वीकृति मिल गई। उस समय हालांकि ये तो पहले से ही तय था, जो कि सामने आ गया कि वो किसके टच में थे, किससे उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन कहा उन्होंने यही था कि मैं कांग्रेस से भी लड़ सकता हूँ, सीपीआई सीपीएम से भी लड़ सकता हूँ, बीजेपी से भी लड़ सकता हूँ, हाँ टीएमसी से नहीं लड़ूंगा, इन तीनों से मैं लड़ सकता हूँ। तो बात यह है कि अब अगर उनको भाजपा की जगह अगर वो कांग्रेस को चुनते तो क्या जयराम रमेश जी मना करते? बिल्कुल भी नहीं करते, कोई पार्टी नहीं मना करती, सब हमाम में क्या है। तो बेसिकली बड़ी बहस या बड़ा मुद्दा जो है वो इस बात का है कि जुडिशियल प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज़ है। संविधान की आप शपथ लेके जब एक जुडिशरी जैसे सिस्टम में आप जाते हैं, रातों रात जिसको कहते हैं चोला बदलना, ये कितना जायज़ है। हमने जुडिशरी के काफ़ी दिग्गज लोग, जिनमें जस्टिस वी गोपाल गौड़ा, जिनकी खुद एक जनता के जज के तौर पे ख्याति रही है, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, तो उनसे भी हमने बात की कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इस कदम को वो किस रूप में देखते हैं। बैकग्राउंड ऑफ दिस जज, यू कैन ड्रा द इन्फरेंस। नाउ thereafter he had gone publicly to the TV. Yes, he has criticized the political party, ruling party. Correct.
he has also said so many things against persons involved in the case, allegedly involved in the case. Okay. Then Supreme Court seized up the matter, directed the Registrar General, get the report from that channel. Yes. What is the content of his speech? Interview. He got it. Yeah. He got it. Yeah. That report. He that, passed an order. also- He passed at 4:30 in the evening. He passed an order. He to passed the an order. Yeah, Supreme Court Registrar You question General. the Supreme Court. No, you question the Supreme Court. Yes. Supreme Court will seize up the matter, suo moto, or somebody must have mentioned in the earlier, okay, that CBI entrustment, and they brought to the notice that he has given interview to the TV channel. Yeah. Registrar General was directed to get the report from the concerned channel. He has directed the Registrar General. Some order is passed. Yes. That order was also taken up by the Supreme Court. A special bench was constituted. Justice Bopanna and another companion judge, my Correct. sister lady there. Right. That was stayed in the evening, late hours. So this is the mindset of the judge. You have no constitution. You have no coordinate bench ruling. You should not. You should not comment on the brother judges on the bench. You attribute motives against them. You stay there. Further pass the order at 1:30. What was the need for you? When you pass the order, there is the matter. That order was taken up. Again, you pass the order after you come to know about that. You are telling that I don't have the stay order. I don't know the stay order. Is it correct? What is the propriety? Certainly not. Now, and Supreme Court seized up the matter. Supreme Court matter is pending. Supreme Court wanted to know what is the content of the speech interview he has given to the electronic channel, one of the electronic channels in West Bengal. That also he passes an order. Yes. You have no judicial discipline at all. You don't conduct yourself to. You don't adhere to the oath of office. Of course, whether he has got ideology is no disqualification. After you are elevated as a constitution, as a judge of the district judiciary, or a high court, or a Supreme Court, you must adhere to the constitutional principles, adhere to the oath of office, function as a judge within the parameters of the constitution and judicial discipline. If every person, every citizen or a non-citizen will have a political ideological commitment. There's nothing wrong. Politics means human science. There's nothing wrong. But you are required to decide the dispute between the individual and individual, between the individual and the state and state. That is the scope of your power, and any legislation enacted by the parliament and the state legislature, you can strike it down. That is the enormous power conferred upon a constitutional court judge. You must objectively, within the parameters, following the binding precedent, following the provisions of the constitution, the matter involved in that case, objectively you must decide. Is it not? You should not mix up your ideology. After you become a judge, your ideology is only your constitution. मुद्दा बड़ा यही है जुडिशियल प्रोप्राइटरी का, कि क्या हम अब जुडिशरी में भी इस ट्रेंड को हवा दे देंगे कि कल को कोई भी जज साहब कहीं भी किसी भी अदालत में बैठे हों और वो यदि वहाँ अपनी उस कुर्सी का इस्तेमाल अपनी इमेज बनाने के लिए या अपने आगे के राजनीतिक कैरियर की दिशा तय करने के लिए करने लगेंगे, तो क्या होगा? कैसे इस बात पर भरोसा होगा कि जो वो न्याय कर रहे हैं उसके पीछे उनकी कैरियर अप्रोच नहीं है? मुद्दा यही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जुडिशरी से जुड़े हुए बड़े लोग, जो दिग्गज लोग हैं, उनकी चिंता है। सुनिए आप। In the case of Abhijit Gangopadhyay, he had been a judge in the Calcutta High Court and was holding a particular roster for deciding certain cases. And while he was a judge, he started giving interviews to channels. He was reprimanded by the Supreme Court of India. Some of his orders were stayed.
In one particular order, his order was stayed by the division bench. Despite the stay, he continued disregarding the order of the division bench. So there is an element of gung-ho-ness about all this. What is worrying me is that how far these judges were in touch with the party in power, how far they were talking to them to compromise their judgments. That is something which will never come out. And someday, someday, if it does come out, it is going to be a revelation that they have been in intimate contact. Justice Gangopadhyay's case is a particularly egregious case because it is not even a case of a post-retirement job or soon after retirement job being given to a judge. It is a case where he resigns and immediately joins within 48 hours. Within 48 hours joins a political party and then admits that he was in touch while he was a judge with that political party, that he had been talking to that political party even while he was a judge. All the while he was giving judgments in politically sensitive matters involving that political party. What Justice Gangopadhyay has done goes against the code of conduct. I think this kind of a thing, to use judiciary as a stepping stone to make an image for yourself, conduct yourself in a manner, and then to go into politics is something that's... It's something so disgusting. And if this is the state of affairs of the judiciary, I think we have a lot to worry about. जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय वैसे हैं पूरी तरीके से पॉलिटिकल मटेरियल. जिस अंदाज में, जिस हीरोइक अंदाज में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनके तेवर देखने लायक हैं. एक रिपोर्टर ने उनसे पूछ लिया कि साहब ये बताइए कि क्या आपने जो फैसला लिया जुडिशरी छोड़ के राजनीति में आने का, बीजेपी ज्वाइन करने का, तो क्या मोदी जी से या अमित शाह जी से कुछ सलाह मशवरा, कुछ भरोसा आपने लिया था? तो कैसे उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा. There is a question that did you get any chance of talking to Amit Shah or Prime Minister since you are... Why this is important? Why this question is to be replied? I do not understand anything. Did you get any time to... No, why? To have some conversation? I will not reply to this question. I will not reply. Any other question? एक दूसरे रिपोर्टर हैं एनडीटीवी के, उन्होंने पूछा उनसे कि भाई आप जुडिशरी में रहते हुए आपने टीवी इंटरव्यू दिया जो कि जुडिशरी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जुडिशरी से जो एक एथिक्स की बात की जाती है उससे ये बिल्कुल अलग है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की. तुरंत उन्होंने बोला, कब बोला सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से टीवी चैनल के हो आप? और उसको उन्होंने उसी समय फैसला दे दिया कि तुम तो एनडीटीवी के लायक ही नहीं हो. Sir, during your time in the judiciary, there were questions. For example, in court, the Supreme Court also said that judges have no business giving interviews on cases before. What Supreme Court has said? What Supreme Court has said? So it was from which media I have come? Sir, I'm from NDTV. So there From was widely NDTV. quoted. You are fully unfit for NDTV. Sir, it was fully unfit for NDTV. Sir, hear me out. No, I will not. Sir, you see it yourself. Yes. Any other question? कूलिंग ऑफ के बारे में जज साहब से पूछा गया तो देखिए क्या उनका जवाब था. You met the Chief Justice in a courtesy meeting. Any words of advice, anything that he told you? No. So many of the critics are questioning the cooling off period. Anything on that, sir? A cooling off period. What is the provision of cooling off period? What is the provision? Can you show me? কিছু সব জানতা সাংবাদিক. Was it BJP approaching you or it was your own concerns that you were... No, both approached towards themselves. Could you please tell us little time period, like when did you decide on... I said by last 7 days. From when I stopped in the adjudication of anything. I was on leave so that I need not do it. I need not, if no adjudication comes to me. I have not done any adjudication for last 7 days. Did BJP reached out to you? Yes. Did BJP approach you, sir? Both sides. I also approached BJP also approached me. जज साहब तो उतर गए हैं कोर्ट से जनता की अदालत में. अब जो भी उनकी दलीलें हैं, जो भी उनके पास अपने फैसले के हक में, जो उन्होंने किया उसके हक में जो भी उनके पास तर्क, दलीलें, आर्ग्यूमेंट हैं, जनता की अदालत में वो सामने आएंगे. तो ममता बनर्जी ने उतार दिया है एक स्टूडेंट लीडर को. कुछ दिनों में ही फैसला आ जाएगा कि जनता ने उनके इस रवैये को लेकर किस तरह का फैसला दिया है. लेकिन वो चुनावी लड़ाई है, वहाँ के लोकल संदर्भ, वहाँ की लोकल परिस्थितियाँ अलग हैं. बहस तब भी जुडिशरी के बीच में, जुडिशरी के दायरे में इस बात की रहेगी कि क्या जुडिशल
प्रोप्राइटरी नाम की जो चीज है उसको, उसके तहत इस तरह के कदमों को कितना जायज ठहराया जा सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट से जरूर बताइए और लीगल ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार।